बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी सहेली हिना जुनेजो और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है सेल्फ एस्टीम यानी कि खुद एतमादी। और जब हम खुद एतमादी की बात करते हैं तो मेरे ज़हन में अल्लामा इकबाल का इतना मशहूर और एक बहुत ही डीप शेर ज़हन में आता है और कोशिश करते हैं कि हम पूरी जस्टिस कर सकें उनके कलाम के साथ। सो व्हाट ही सेज इज बेसिकली कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट इज कि हर बंदा इसको इसका मायने अपने तरीके से समझ सकता है और उसको अपनी बेनिफिट के लिए अपनी सिचुएशन के साथ रिलेट करके अटैच कर सकता है। अब इस वक्त इस शेर को पढ़ने का मकसद हमारे टाइटल के हवाले से ये था कि हम अपनी जात को इतना बुलंद करें, अपनी सेल्फ एस्टीम को, अपनी खुद एतमादी पर इतना काम करें, इतनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट करें कि अल्लाह सुब्हान ताला हम पर फख्र करें और हमसे पूछें कि बता बंदे तेरे दिल में क्या दुआ है कि जो कि मैं तेरे लिए पूरी कर दूं। तो ये हमारे टॉपिक के हवाले से ये शेर इस तरह से जो है वो बखूबी फिट बैठता है। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक से मजीद डिटेल में तज़किरा करने के लिए हमारे पास जो आज गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं उनका नाम है तबस्सुम साबिर और तबस्सुम साबिर जो हैं वो इमोशनल मास्टरी कोच भी हैं। तो चलें इंशाल्लाह बगैर किसी ताखिर के तबस्सुम को ऑन बोर्ड वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस, हाउ आर यू? Walaikum assalam. Alhamdulillah. How are you? Alhamdulillah, very well, and welcome for the second time again on my program. Jazakallah khair. It's a pleasure to be here. Alhamdulillah, as always. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Feelings are likewise, sis. So, sis, as you would have heard yourself earlier, I was talking about the, self-esteem and the khud etmadi and the element of linking it with Allama Iqbal, such a beautiful share poetry. I was just wondering that on a day-to-day basis, I bumped into so many women, and when we sit, chat and we talk to each other, what I've realized is some of the sisters, subhanallah, although self-esteem is so huge, if you just break the whole word down into two words as though self and esteem means khud and etamadi. That means that the word basically, is gets derived from ourself, from our within. It's got something to do with us. So if something is attached with us, if there's something that's got to do with us, how can we take it so lightly? That many sisters, subhanallah, don't even understand the meaning of self-esteem. So before we delve deeper into covering what are the triggers, why people or women go into low self-esteem, उनकी खुद एतमादी जो है वो झुक जाती है, because of that they get into depression and anxiety and so on and so forth. I think it's very important for us to first and foremost cover what do we mean by self-esteem and why is it so important for us, inshallah. Gee, and I think you said it carefully, very perfectly with respect to it being khud etamadi. Khud is the biggest part of it, self. सब लोग ढूंढते हैं ये चीज वो like अपने फैमिली में, अपने बच्चों में, अपने in-laws में, and the fact is that this actually comes from inside of you. It is your own self-worth जो आप खुद अपना personal value करते हैं, वो कितना खुद अपने आप को respect करते हो, और ये this is a duty to ourselves in Islam as much as it is as like a human being. Yeah, absolutely. Yeah, I think you're right in saying that कि देखें अल्लाह सुब्हान ताला ने it takes us back to the basics, subhanallah, that why were we created, why were we sent on earth, it's very important for us to understand कि हमारा इस दुनिया में भेजे जाने का higher purpose क्या था, main मकसद क्या था। ठीक है, the way I look at it is दो ही मेन वजूहात है। एक सबसे बड़ी वजह अल्लाह सुब्हान ताला की सबमिशन, अल्लाह की अतात, अल्लाह की इबादत, ठीक, और उसी को ही अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरे करने के लिए अपनी जिंदगी जो है वो आपने गुजारनी है, विच इज द मीन्स टू द एंड, राइट। तो एक तरफ आपके हुकूक अल्लाह हो गए
और दूसरी तरफ आपके हुकूकुल इबाद हो गए, है ना? यानी कि एक तरफ आपके राइट्स towards Allah subhanahu wa ta'ala and then your rights towards the others. Now, whilst fulfilling the two of them, क्योंकि बीच में आप हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक ब्रिज बनते हैं दोनों तरफ से, ठीक है? तो जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस आप अपने आप को डेवलप करने में डालेंगे, जितना ज्यादा वक्त, जितना ज्यादा एहसास खुद को अपलिफ्ट करने में आप डालेंगे, उतना ही बेनिफिशियल होगा आपकी अपनी जात के लिए, टू बिकम सेल्फ अवेयर एंड टू नो हु यू आर in order to know Allah subhanahu wa ta'ala better, and that's huge. That's the first part of really why we were created, to connect with Allah subhanahu wa ta'ala, to get to know Allah subhanahu wa ta'ala at a deeper level, and how do we do that, unless we do not um, take a step back, take a moment, take a breather in our life and reflect really, what are the signs of Allah subhanahu wa ta'ala around us. And उन्हीं signs में जिस तरह से अल्लाह ने कहा है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, यानी कि बेस्ट ऑफ क्रिएशंस है, तो हमारा हक है दूसरे मखलूकात के ऊपर, दूसरी क्रिएशंस के ऊपर. तो अगर दूसरी क्रिएशंस के ऊपर हमारा हक इतना इतना ज्यादा हैवी है, इम्पोर्टेंट है, तो हमारा अपना हक, हमारी अपनी जात के ऊपर कितना इम्पोर्टेंट होगा. द फैक्ट दैट we're mothers, we are, subhanallah, upholding the whole family unit. So when we go down, when we get drained, obviously उसका impact हमारे बच्चों पे पड़ता है, पूरी family unit पे पड़ता है. अगर बच्चे pull down हो जाएंगे तो obviously बात है वो हमारी next generation है. यानी what we're looking at is कि पूरी उम्मा जो है वो हमारी drain होगी, है ना? क्यों कहते हैं कि बच्चे हमारे assets हैं, right? So अगर वो हमारे assets हैं तो हमें, और माँ तो हमेशा अपनी औलाद के लिए कुछ भी करेगी, इंसान. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को समझें कि हमारी अपनी जात जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और अपना सेल्फ केयर करना, अपने एस्टीम को, अपने खुद एतमाद को बुलंद करते रहना, अल्लाह की जात के साथ जुड़कर, and make Allah subhanahu wa ta'ala the source of satisfaction and love for yourself and validation for yourself. Because सुकून से, that's where it is. इसके अलावा सुकून कहीं से भी नहीं हमें आएगा. हम क्या करते हैं अपनी रोजमर्रा में, एक्सटर्नल वैलिडेशन पे रिलाय करते हैं. कभी हस्बैंड से लव मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, टेंशन मांगते हैं. जब नहीं मिलता तो हम एंग्जाइटी में चले जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम लो सेल्फ एस्टीम में चले जाते हैं. बट बहुत सारी बहनों को ये पता नहीं है, इस प्रोसेस के हवाले से उनको इल्म नहीं है कि लो सेल्फ एस्टीम किसको कहते हैं और इसमें हम किस तरह से घिर जाते हैं. इट्स अ विशियस साइकिल, इट जस्ट कीप्स गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. वुड यू एग्री विद दैट, सिस? Yeah, 100%. I mean, a lot of the women that come to me, they will come and they don't even know that they have low self-esteem. उनको पता भी नहीं होता है, and they'll come to me and say मेरी energy low हो गई है, मैं ये diet कर रही हूँ, मैं ये vitamins खा रही हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता. या they focus on impressing या people pleasing, दूसरों लोगों से please करने. And they don't really focus on all of these things don't really matter unless you're working on yourself. And if you're doing something for a purpose, एक वजह से कर रहे हो, you need to perfect yourself and your character. वो खुद बहुत, it will leak out into all areas of your life. आप अपनी life इतनी beautiful हो जाएगा, वो जो, that's why I call my brand beautiful, कि आप सोच भी नहीं सकते. It'll just happen to naturally for everybody, and this is what people find it quite difficult to understand. Then people will say they have anxiety, they have depression, they have negative. आजकल बहुत मेरे पास आ रही हैं women जो कह रहे थे मैं बहुत negative सोच रही हूँ सबके बारे, ये के बारे, like बच्चों के बारे, husband के बारे, in-laws के बारे, and I don't know why. But the key thing is to really understand that it's all about perfecting yourself and your character first, and then pleasing your husband and your children. You can do all of that once you have self-esteem, inshallah. Yes, subhanallah. So sis, would you say that so low self-esteem has got to do a lot with your mindset as well, apart from the spiritual connection which we covered already? Would you say that it's got a lot to do with your mindset? It has, but I think it all ties in, because the thing is, you can't just when working on your mindset, it naturally improves other things. So, for example, when working on your mindset, it'll improve your spiritual connection, it'll improve your relationships with your children, it will improve your relationships with husband, in-laws, family, relationships, all get improved. So I would definitely say mindset probably the base to start. A lot of people
talk about the other problems being the problem. The husband is the problem, that my relationship with him, my children don't listen to me, my in-laws, I don't have a relationship with them, I बस मैं negative सोच रही हूँ आपके बारे अपने आप के बारे all the time. लेकिन they don't actually understand when it comes to their daily mindset. It's very small things. Are you doing your self-care? खुद के लिए क्या करती हो आप? On a weekly basis, daily basis. Allah Ta'ala कहते हैं that you have to look after yourself. How are you looking after your body? Some people are anxiety and depression वो खाते जा रहे हैं. Is that looking Yeah. after your body? No, that's not looking after your body. Go back to the sunnah. Go back to your mindset. It's all in there. It's all in there. Yeah. Yeah, subhanallah, you're so right, spot on, subhanallah. Start from the basics, get connected with the sunnah, start following the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, of the Azwaj Mutahhara of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we've got all the answers to all our problems basically in our deen. We just need to reflect and pause and understand, where we come from. Again, the intention should be that we're sent to this earth to submit and to pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Praise Allah subhanahu wa ta'ala. And if at all you're looking for love, you're looking for attention, you're looking for mercy, then look at it, seek it from the source, which is Allah subhanahu wa ta'ala. So beautiful, his name saying Ya Wadud, Ya Rahman, Ya Rahim, all these beautiful names of Allah subhanahu wa ta'ala. These are the sources of rahmah for us. So I think, as Muslims, we should memorize the 99 beautiful names of Allah subhanahu wa ta'ala anyway, and try to take strength from those names, in the form of meditation and zikr for us as Muslims. So alhamdulillah, that's a good thing. I'm glad that you touched upon the fact that, बच्चों पे भी हमारा जो है वो गुस्सा निकल रहा होता है, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग दिस वायरस टाइम. Yes. We're all cooped in our homes. डिवोर्स के रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के स्टार्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, हम इतने फ्रस्ट्रेटेड रह रहे हैं. वी वर सो यूज्ड टू लिविंग आवर 9 to 5 लाइव्स कि वी हैड मेड दैट आवर दुनिया. वो हमारी एक जिंदगी का पैटर्न बन गया था जिस तरह से. अब जब हम लोग घरों की चार दीवारी के अंदर जो है वो मुश्तमिल हो गए हैं, तो वे लिटरली इनटू ईच अदर्स फेसेस. हमारी जो स्पेस है इमोशनल, वो ऑक्यूपाई हो गई है. पेशेंस हम वैसे ही बहुत ज्यादा एज एन उम्मा लैक करने लग गई है. इमोशनल ब्रेकडाउन हमारे राइट लेफ्ट सेंटर हो रहे होते हैं. हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ मेंटली फिजिकली क्या चेंजेस हमारे अंदर आ रही हैं बॉडी के अंदर. फिर चूंकि हम उनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे होते हैं, उनको हम अंडरस्टैंड नहीं करते क्योंकि हम सेल्फ अवेयर नहीं होते. ठीक है, खुद एतमादी हमारे अंदर नहीं होती है. हम हर चीज का जो सोल्यूशन है वो बाहर से ढूंढते हैं. ठीक है, फिर उसमें क्या है कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस से गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़े हम हो रहे हैं, उसका जो रद्द अमल है वो बच्चों के ऊपर होता है या मियाँ के ऊपर होगा या अपनी जात के ऊपर होगा इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ हार्म, या बच्चों के ऊपर वो निकलेगा. तो हमें क्या करना चाहिए कि ताकि हमें जब हमारी सेल्फ एस्टीम लो हो रही हो, could be whatever could be the reason, could be हमारे पास देखें टू बिगिन विद, अगर हम ट्रिगर्स की बात करें कि कहाँ से हमारे लो सेल्फ एस्टीम का जो इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये जो है ये शुरू कहाँ से हो रहा है, ये जनरेट कहाँ से हो रहा है, वेयर इज इट रूटिंग फ्रॉम. तो नजर हमें यह आएगा कि फैमिलीज और सोशल लेबल्स इतने सारे खवातीन के साथ स्पेसिफिकली जोड़ दिए जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर देते हैं, और उसके साथ फिर जो है वो लेबल्स इतने सारे अटैच कर देते हैं. फॉर एग्जांपल बॉडी शेम हो गई, हमारे अपनी देसी कम्युनिटी में shouldn't be saying it, but sad but true कि काली है, मोटी है, she's not worthy enough, she's not good enough. फिर इससे बड़ी बात कि अगर गलती से इत्तफाकन उस बेचारी की नसीब में था कि तलाक हो गई, फिर उसके साथ वो लेबल भी जोड़ देते हैं कि जी तलाक याफ्ता भी है. फिर अगर उस मिस्कीन के नसीब में कोई बच्चे एक दो लिखे हुए थे, तो वो भी आपको एक बैगेज लगने लगता है कि वो तो बच्चों वाली है और तो बच्चों का उसके साथ बैगेज है. ये सब चीजें जो है वो हमें एक कंप्लीटली लो सेल्फ एस्टीम में डाल देती हैं. एंड दिस इज ऑल कल्चरल.
ये एक कल्चरल बैगेज है, एक टेबू है, टेबू भी नहीं है, टेबू से भी ज्यादा एक बैगेज है, जो कि इंसान को लिटरली नो पुराने दौरों में जो है वो कहा जाता था कि औरतें लड़कियां पैदा होती थी तो उनको जो है वो जिंदा दफन कर दिया जाता था। आई थिंक ये तो हम रेप्लिकेट करें एग्जैक्टली वही मॉडल इन स्पिरिट, कि एक बच्ची पैदा हुई है, बड़ी हुई है, जवान हुई है, उसके बाद जैसे ही वो शऊरमंद होती है, प्यूबर्टी की एज में आती है, तो उसके ऊपर जो है वो अंबार एक्सपेक्टेशंस का डाल दिया जाता है, उसकी अपनी खुदी को खत्म कर दिया जाता है, उसकी आइडेंटिटी को कंप्लीटली मार कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, और फिर तरह तरह के एक्सपेक्टेशंस भी उसके ऊपर लाद देते हैं हम। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट to further literally drum her down or dumb her down, in reference to her identity and intellect and emotional resilience, हम नेम शेम भी करना शुरू करते हैं, बॉडी शेम भी करना शुरू कर देते हैं, लेबल्स भी इसके साथ में लगा देते हैं। तो जब औरत इतनी ज्यादा इन तकलीफों से गुजरती है, तो कैसे वो अपने आप अपनी सेल्फ एस्टीम को जो है वो रिस्टोर कर सके, ताकि जिन भी चेंजेस से वो मेंटली या फिजिकली गुजर रही है, बच्चे खुदारा सफर न करें। तो क्या सॉल्यूशंस आप देंगी इस हवाले से? हमारी बहनों को क्या करना चाहिए फॉर देम टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ फेज दैट दे आर गोइंग थ्रू? दे नीड टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप बैक एंड रियलाइज कि किस किस्म की चेंजेस आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम, और अगर है तो उसको डील करने का भी तरीका होगा। तरीका ये नहीं है कि हम जो है वो राइट लेफ्ट सेंटर दन दना के बच्चों को 2-3 चपेड़े लगा दी, उनको बातें Yes, सुना दी, उनको कमरों में बंद कर दिया, मियाँ को भी जो है वो गाल गलौज दे दी, इफ यू रियली एम्पावर्ड तो yes. अलग बात है, Empowered, yes. और आजकल वो जो एक नया हैशटैग कैंपेन निकला है कि एम्पावर्ड इन हिजाब, I'm like, completely taken aback. To me, it's more like patronizing. You know, आजकल क्यों हम इसको इतनी बड़ी चीज बना रहे हैं, empowered in हिजाब? हम तो हिजाब में जब से दीन आया तब से थी, और उससे पहले से ही empowered थी। Take the example of Hazrat Bibi Khatija. तो अभी suddenly, this is more patronizing to me. I understand people are doing it with the good intention. However, if I had to say something along the lines or run a campaign, along the lines, I'd say beyond empowered in hijab, why only Yes. empowered? That's our conversation for another day. But going back to what kind of solutions can we give to our sisters कि बेचारे बच्चे सफर न करें और family unit सफर न करें? One of the things that I found massive is that the community, they don't talk to each other about their problems. So that was a big Mm, problem, because telling other people that we have a problem then makes us very unable to cope. ऐसा वो yeah, हम small हो जाते हैं ना किसी को पता कि हमें yeah. कुछ problem हो. So I Mm, think that was the biggest problem I found, which is why I got into coaching. That was one of the mm, reasons, because some women don't feel comfortable telling people in their own community, वो बड़ों से mm, बात नहीं कर सकते. They need somebody नहीं, else to talk to. yeah. So definitely, without seeking a coach, first of all, there's lots of things you can do. Inshallah, I know this is going to seem very counterproductive. Some सोचते हैं कि ये कैसे होगा कि my mind change हो जाएगा. But with gratitude is a big thing, and it's scientifically proven भी हुआ है कि it changes your mindset completely. Sif SubhanAllah. subah, before you do anything in the morning, and if you can do this with your prayers, your fajr namaz, that'd be great. If not, Mm, just 3 things that you're grateful for every single day. 3 new mm, things. Rosanna, mhm, since yesterday, and the same ones tomorrow. No, new things. Socho, which things you are grateful for. We have been given so many blessings, and when you're in that state of mind, jab your very low self-esteem, वो भूल जाते हो सब कुछ. You really do, mm, and you need to reconnect to that. You need to reconnect mm. for every blessing that you do have. That's one of the Indeed. biggest starts. वो अपने Mm, आप के लिए you need to take time out. ये mm, mm, मैंने देखा, like our generation of women, I know they're very busy, and I know they're very there's a lot of roles they're trying to play, but you must take time out for yourself. How will you give yourself time? How will you give other people time if you cannot give yourself time? This is very yeah, important. absolutely. वो Mm. आप frustrated हो जाते हैं ना किसी को time देके, लेकिन that's because you're not spending time on yourself. Yeah, you're right. You're right. You're absolutely right. प्रोग्राम से पहले जिस तरह मैं आपसे तस्करा कर रही थी कि कितनी मैं थक गई थी, खाना वाना पका करके, and at the end क्या है कि आप थक जाते हैं, and you're like,
व्हाट नेक्स्ट नाउ, ये तो मेरा रोल था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परफॉर्म कर दिया, अल्लाह के एहसान, अल्लाह ने एबिलिटी दे दी कि मजे मजे के खाने पकाए, घर को साफ किया, मियाँ के का ख्याल किया, बच्चों का ख्याल किया, बट देन देयर हैज टू बी मोर टू इट, बिकॉज अगर आप उसको मेरा तो दिमाग बहुत बहुत ज्यादा क्यूरियस है, बहुत तेजी की स्पीड पे चलता है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं शायद बायपोलर हूँ, कि एक सेकंड में मुझे, well, generally human beings, between 40 to 60,000 thoughts cross their minds, right? तो Yeah. अगर इतने ज्यादा थॉट्स आपके जहन से गुजरते हैं, तो एक आम इंसान जिसने एनएलपी को नहीं पढ़ा हुआ, पर्सनल डेवलपमेंट को नहीं पढ़ा हुआ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को नहीं पढ़ा हुआ, न्यूरो साइंस के अंदर जिसका इंटरेस्ट नहीं है, उनको तो ये चीज समझ में नहीं आती है, वो तो कंफ्यूज होके रह जाते हैं, वो तो उनको ये लगता है कि वी बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ आवर सिस्टम, हम Yeah. विक्टिम बन गए हैं, हमारा दिमाग जो है वो इतनी तेजी स्पीड से चलता है, किसी एक जगह पे कंसिस्टेंसी नहीं आती, कोई एक थॉट हमारे जहन में नहीं रुकता, हम कभी राइट लेफ्ट सेंटर घूम के रह जाते हैं, हमारी जिंदगी जो है वो वेस्ट हो रही है, सो इज दैट ऑल दैट लाइफ इज ऑल अबाउट, वो इस तरह से इस चीज को देखते हैं। पर हम इस चीज को चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा है, और तजुर्बा भी इतना सारा हम अपनी जिंदगी का लेकर आए हैं, तो हमें आगाही है, वी कैन आइडेंटिफाई दैट at this point in time, whatever is running through our mind, we can jot it down, we can journal it, right? And then we Journal. can Yes. use different tools, like we can prioritize कि इस वक्त अर्जेंटली हमको किस चीज को, कौन से गोल को हमने अपने अचीव करना है, ख्वाह उसका ताल्लुक हमारे डे टू डे चोर्स के हवाले से है, या अपने जाती रिलेशनशिप्स के हवाले से हो गया, या दफ्तरों के कोई काम हो गए, जो भी हो गया, उसमें फिर हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, अर्जेंट के डब्बे में अर्जेंट कामों को डाल दें, इम्पोर्टेंट के डब्बे में इम्पोर्टेंट कामों को हम डाल दें, इस तरह करके हम वी कैन प्रायोरिटाइज एंड देन सेगमेंट लाइफ and different areas of in life of our lives to make it easy for ourselves. So the critical or the key word here is easy, and we Yes. should care front. उसके बजाय हम क्या करते हैं, हम कन्फ्रंट करते रहते हैं, we keep beating ourselves around the bush all the time that I'm worthless, I'm not worthy, क्यों? बिकॉज दैट्स व्हाट्स बीन ड्रम्ड इन आवर हेड्स, हमारा माशरा हमें जो है वो इसी लेवल पे ला के रख देता है औरत को कि आपका काम चार दीवारी के अंदर है, which alhamdulillah if the husband is providing for, we don't mind looking after the house, to be fair. मगर अगर हस्बैंड आजकल के दौर में एक्सपेक्टेशन ये है कि औरत घर को भी चलाएगी, बाहर के काम भी करेगी, कमा के घर पे भी लाएगी, तो कितने सारे रोल्स हैं हमें फुलफिल करने वाले, तो जस्टिस भी तो करना है ना, इंसाफ भी तो करना है, हर डिफरेंट हिजाब के साथ जो हम पहनते हैं या हैट के साथ, इफ यू लाइक, तो वो जस्टिस Yes. भी करना है, इंसाफ भी करना है, बिकॉज अल्लाह इज वाचिंग यू। तो इसमें फिर ये ना कि हमारी फितरा है कि वी ट्राई टू बिकम, क्या कहते हैं उसको, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एक हम Yes. क्या कहते हैं कि हर चीज को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं, उस पर फिर हम बर्न आउट हो जाते हैं, जब बर्न आउट हो जाते हैं फिर ऐसी स्टेज आ जाती है कि जिसमें हम बेसिकली लो सेल्फ एस्टीम में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, बॉडी आपकी गिव अप कर देती है, माइंड आपका गिव अप कर देता है, यू जस्ट बिकम स्टैटिक, यू डोंट नो वेयर टू गो फ्रॉम देयर, राइट? और फिर उस असना में कि जब आपकी बॉडी गिव अप कर गई है टेम्पररी, माइंड आपका स्टैटिक हो गया है, फिर शैतान स्टार्ट्स प्लेइंग इट्स पार्ट। जब आपकी रूह डाली गई थी उसी टाइम पे शैतान जो है वो भी आपके बॉडी के अंदर आ गया था। तो ये I think बहुत important point is this that I would make to that I would like to highlight, that at times when we're in low self-esteem and the inner chatter that we're having with ourselves, if we can hear ourselves saying these words and sentences to ourselves, that you're worthless, then you need to be mindful there that this is not you, this is Very. your unconscious mind, this is from shaitan. And what you then need to do is, because words are very powerful, you need to stop your thought process then and there. Don't even give a single second thought to that thought process, negative thought process. Immediately reverse, rearrange, or reframe that sentence from you're worthless to, or I'm worthless to, you are worthless. You are not worthy, you are not good for anything. तो अब यही चीज जो है वो शैतान को बोले, जो कि वसवसे आपके दिमाग में बेसिकली डाल रहा होता है बैठा हुआ, जो कि आपको लो सेल्फ एस्टीम में डालता है, आपको धक्के देता है ताकि आप वहीं रहें, एंड इवेंचुअली गलत काम करने पे आप मजबूर हो जाए। यही होता है ना, दैट्स द Yes. इम्पैक्ट दैट यू हैव
in the end. Gee, Kids are suffering, you're not language feeling fulfilled. Yeah. Carry on, sis. Yeah. language is like one of the first things that again I teach with my coaching clients. I notice this in a lot of women that come for coaching is language is one of the biggest problems. And I Mm. always say to them, would you say that to your child or would you say that to your best friend? Yeah, would you say that to your sister? Would you say you're fat, you're ugly, तुम सब कुछ भूल जाती हो, you don't remember anything, तुम किसी काम की नहीं हो? Yeah. Would you say that to anybody else in your No. life? No. तो हम खुद से क्यों कहते हैं? Why do we say that? And that's not acceptable. Again, this is your given duty from Allah to respect your body, your soul, everything that's been given to you. And part of that is how we speak to ourselves. Our thoughts and our language do become reality because the more we say it, the more we begin to get convinced by these things. कितने के Yeah. कहोगे अपने बच्चों से कि you're stupid, वो some time के बाद believe करेगा कि वाकई में stupid हो. Yeah, Yeah. it's really the same thing. You have a child inside. We all have an inner child. Mm. We all have something inside of us that listens to these things. वो कहते रहेंगे, then you'll start to believe it. So start telling Yeah. yourself good things, inshallah, and work towards the good things, inshallah. Yeah, yeah, inshallah. Yeah, that's very powerful, sis. Language is huge. We have to be so, so careful. You're so right. कि जो चीज बार-बार हम repeat and repetition, when it comes to gratitude, when it comes to affirmations, repetition is the key because eventually आप unconsciously competent बन जाते हैं ना उसी काम को Yeah. करते करते करते. For example, एक बच्चा है वो साइकिल चलाने की कोशिश करता है बचपन में 1-2 मरतबा गिरेगा 3-10 मरतबा गिरेगा उसके बाद वो चलाना शुरू करेगा वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा कॉन्शियसली कि ये अपनी विंस भी सेलिब्रेट करेगा मेरा छोटा है मुस्तफा 2 साल का he sees his older siblings doing things and subhanallah he's always wanted to become independent like them तो वो खुद ही से चीजें करता है और अपनी अपनी विंस को खुद सेलिब्रेट करता है बड़े बड़े खुद को माइलस्टोन्स देके अचीव करके फिर खुद ही बोलता है hooray I did it you know Yeah. so alhamdulillah Oh, every day yeah every day I see him 5-10 मरतबा दिन में खुद को वो खुद से ये अफर्म करता है तो oh. अल्हम्दुलिल्लाह इमेजिन उसकी खुद एतमादी कितनी ज्यादा है अल्लाह को कितनी प्यारी होगी अल्लाह उससे पूछ रहे होंगे बच्चे से कि बेटे बताओ तुम्हें और क्या चाहिए तुम्हारे दिल में क्या दुआ है तुम क्या अचीव करना चाहते हो ताकि मैं तुम्हें वो दे दूं है ना तो इसी तरह से हमारे लिए भी एज women इज द सेम प्रिंसिपल कि हम बच्चे बन जाएं एज यू मेंशन्ड हम हर इंसान के अंदर एक छोटा बच्चा है एंड दोबारा से वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स खुद को उस जमाने में ले जाएं बैक इन द टाइमलाइन यूज कर लें एज अ थेरेपी कि जब हम छोटे थे हमने साइकिल चलानी शुरू की शुरू में हम कॉम्पिटेंट नहीं थे बाद में हम सीख गए वी बिकेम कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट और उसके बाद चलाते चलाते अपने घर के आसपास की गलियों में स्ट्रीट्स में दुकान तक स्कूल तक आना जाना इतने ज्यादा कॉम्पिटेंट हो गए कि वो स्किल जो है वो हमारे लिए वी मास्टर द आर्ट ना वी बिकम Natural हो अनकॉन्शियसली जाता है. कॉम्पिटेंट अबाउट इट Yes. उसको हम रिपीट करते रहते हैं तो वही चीज है कि अगर हम खुद को बुरा भला कहते रहेंगे तो अनकॉन्शियसली हम खुद को बुराई की तरफ जो है वो लेकर जा रहे हैं धकेल रहे हैं However, अगर हम अपने आप को कॉन्शियसली अच्छे अच्छे मैसेजेस देंगे कि you're worth it, you're beautiful because Allah subhanahu wa ta'ala has created you as a mother, as a woman, as an ashraful makhluqat. What more do we need? And alhamdulillah, we're capable of handling all sorts of, challenges that we come across day in and day out. And alhamdulillah, we're hale and hearty. We're living in heated homes. We've got a roof over our head. We've got shelter. Garam kapde hain पहनने के लिए गरम गरम बिरयानी और हलीम और निहारी और मजे मजे के खाने हैं खाने के लिए तो वहीं से हमारा ग्रैटिट्यूड भी शुरू होना चाहिए कि या अल्लाह तेरे करोड़ एहसान हर नेमत के लिए जिससे आपने हमें नवाजा और हर उस नेमत के लिए जिससे आपने हमें बचाया बिकॉज अगर अगर वो चीज आपको सर्व नहीं करती तो कोई फायदा नहीं था ना तो हम that's the way you need to approach and look at life that everything is a nema everything is a blessing in disguise if it's good for you Allah's going to give it to you if it's not good for you then it's maybe good for somebody else but at the end of the day it's a nema that's the way we need to approach every challenge that's how I look at life anyway what do you have to say about that sis
Yeah, I mean, one of the things that I speak quite often about with people is they're having some money issues, so they will start to focus on that. And I always say you should be grateful that you have heating and that you have a bill to pay for, you have gas, you have electric, sab kuch hai. Be grateful, and Allah will. That's we know Allah will give you more the more grateful you are. So, inshallah, just reframe it. Look at things differently, look at things from and I do realize when you start, this is very hard, this is very like less easy to do when you're new to this, but inshallah, slowly as you start to build momentum, as you start to focus on all the gratitudes, more things will come to you and you will see your life very differently, inshallah. Yeah, inshallah. And why do sisters struggle then in the beginning? Is it the leap of faith is not there, the tawakkul, the iman levels are not there? What do you think is the gap, sis? It's a bit of everything, to be honest. Mostly, Mhm. it's the self-esteem that's taken a knock, and that does affect your self-confidence. It's actually a physical thing that happens in the body, so there's chemical reactions that occur. But a lot of time it is because there is low iman, there is low tawakkul, and again, that's usually because of a series of events have happened, and then people have anchored themselves to an emotion or a feeling. So they've decided that this. I kept on asking Allah subhanahu wa ta'ala for this thing. He didn't give it to me. So what's the point in praying? What we don't realize is Allah ta'ala is always directing us in a correct direction. So if He didn't grant you something in this occasion, it's for your betterment. It's either for the improvement in your character, or it will be for something that He's going to provide something even better for you. So inshallah, when we keep that focus in our mind, what can be better than that, inshallah. Subhanallah. And then would you say that that is a key, that the gratitude and the affirmation and the tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala, that's going to help us to stay in a flow state every day? Because obviously, based on the external environment, circumstances, change इतनी सारी हमारी जिंदगी में हो रही है कि motivated रहना, productive रहना आसान नहीं है. थोड़ा सा मियाँ ने झड़क दिया, इन लॉज की तरफ से थोड़ी सी जो है वो डांट पड़ गई, तो हमारे तो आंसू ही नहीं बंद होते. तो किस तरह से हम क्या करें कि वी डोंट लेट दीज एक्सटर्नल circumstances affect us? What can we do? There's a lot. The two things that I mentioned earlier is a good start. So journaling is good, but some people don't like journaling. So journaling is writing our feelings down. वो सोचे ये सिर्फ डे डायरी नहीं है. डे डायरी के बाद में सोचो कि अब what can I do different in the future? अब how can I move differently in the future? कि ये मैं क्यों affect हुई हूँ इतने deep एक चीज को जो इतना deep नहीं है. Why am I being affected by this? What memory does it remind me of? And this is why we use like timeline therapy when you're having one-to-one coaching. That's really effective way of removing that negative emotion. We always relate it back to something that's happened in the past, even if it's not even connected to the current situation. So that's something that definitely people need to look into and consider. Inshallah. When you dissociate yourself with the current issue, you take a balcony view and try to put yourself in the other person's shoes. Okay, जो है वो, as they say, you need to first understand in order to be understood. But where our hang-ups are, okay, we're not being heard, we're not being understood. What we don't realize is that we are on the effect side. We need to be on the cause side. And how can we do that? We can do that by stepping into the other person's shoes and realize कि अगर अगले बंदे ने आपसे कुछ गलत कह दिया है जिससे आपका दिल दुखा है, तो उसकी वजह क्या बैठी? अगला भी तो इंसान ही है at the end of the day, just like you. ऐसे कौन से सीरीज ऑफ इवेंट्स उनकी लाइफ में होकर गुजरे हैं जिसका इम्पैक्ट उनके जहन पर इस तरह से बैठ गया है, जिसकी वजह से वो ऐसे रिएक्ट करते हैं आपके साथ. एंड कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि उसका ताल्लुक उनकी पिछली पास जिंदगी से न भी रहा हो. परहैप्स हिज लव लैंग्वेज इज डिफरेंट टू योर्स. वो भी हम खवातीन जो है वो नहीं समझती. वो ही एक्सपेक्ट करती हैं जैसा हम चाहते हैं, एंड फिर उसी में अपने आप को ग्राइंड करते रहते हैं, पिसते रहते हैं, रोते रहते हैं, हाय मेरे अल्लाह, मुझे प्यार नहीं दिया, मुझे झिड़क दिया, मुझे डांट दिया. तो all the time relying on external validation rather than seeking love and bounty and mercy from the source, Allah subhanahu wa ta'ala. And that's the main purpose. बहुत सारे लोगों को, you won't believe, sis, they don't even understand the meaning of why we get married.
If you had to ask them from on top of their head, well, we get married, 50% उनके जवाब सही होते हैं कि we marry for the sake of each other, which is okay, that's fine, that's one element. However, that's not the whole point why you get married, right? Marriage for two people is just a means to the end. The main reason is for two people to come together so that they can satiate each other physically, emotionally, mentally, and establish a deeper connection with Allah subhanahu wa ta'ala. That's the main reason you come together, to bring the best out of each other, to complement each other. For example, फजर का टाइम है, नकाहत हो रही है, मैं स्नोर कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ, बहुत पूरा दिन काम करके मुझसे उठा नहीं जा रहा, तो मियाँ जो है वो क्या करेंगे, ओए जल्दी से उठो, तुमने नमाज पढ़नी है. Is that what he's going to do? Yeah, is that what he's going to say? Or is he going to say that, he's going to caress you and help you get out of your bed, make you realize that Allah subhanahu wa ta'ala, this is our personal appointment with Allah subhanahu wa ta'ala. How can you miss it? Allah's saying that जो मेरे तरफ, I don't exactly know कि कितने कदम चल के आए, but hypothetically आप एक कदम चल के जाएंगे अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह ताला आप पता नहीं कितने टाइम्स आपकी तरफ जो है वो खुद चलकर आएंगे और आपसे बोलेंगे कि बता तुझे क्या चाहिए. So if that's the kind of relationship, that's the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, why would we want to miss that opportunity? So that's what I'm on about. But बहुत सारे couples जो हैं उनकी main understanding या basic understanding of what marriage is all about वही गलत है. They think that we marry for the sake of each other. फिर जो उनकी लंबी सी एक लिस्ट होती है टिक करने वाली, क्या कमाता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, कितने बेडरूम्स हैं, इंडिपेंडेंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ओ मेरे अल्लाह. And the leap of faith is nowhere to be seen, whereas that box needs to be at the top. And apart from that, I suppose दो तीन आपके जो non-negotiable values हैं, अब वो डाल दें, keep it simple, and leave it to Allah to fulfill your relationship with mercy, with love, with rahmah. Again, ask from the source, to feel we are just catalysts. Allah subhanahu wa ta'ala, has promised कि वो मोहब्बत यानी कि लव जो है वो हार्ट्स में डाल देंगे अगर हम अल्लाह सुब्हान ताला से डीपर लेवल पे कनेक्ट करें. अगर वो कनेक्शन नहीं है तो आई एम सॉरी, नो मैटर व्हाट यू डू, you're not going to feel at peace in your heart, you're not going to feel fulfilled. And it's the same, this is the formula to connect yourself with Allah subhanahu wa ta'ala at a deeper level, which is then going to help you with coming out of low self-esteem, developing higher levels of confidence, developing yourselves personally. तो एक तो तरीका ये हो गया डिसोसिएट करने वाला, कि अगले के जगह में आप खुद अपने आप को चेंज करके डाल के देखें और फिर देखें कि कैसे फील होता है. तो ये तरीका. इसके अलावा what else? And we covered about words, how powerful words are. We spoke about gratitude. We spoke about affirmations. But is there anything else, any other strong message or tip or advice you'd like to give our sisters that helps them, stay calm, stay in tuned with their body, and please, have patience during this time. Inshallah, it's going to pass. Nothing lasts forever. This too shall pass. बच्चों पे माओ का जो है ना वो जुल्म ना निकले. बच्चे मासूम हैं, बच्चे बहुत मासूम होते हैं. वो I can't say beyond this, मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं, बच्चे बहुत मासूम हैं. So you need to give some advice, as a professional कि किस तरह से वो अपने आप को काम रख सकती हैं इस difficulty के time में. Yeah, I just focus on एक चीज मैं कहूँगी before we go on to that is judgment. Judgment is very, very big in our community, and one thing I will say is judgment. Usually, what happens is the people that judge other people the most actually have the most judgment reserved for themselves. They're most judgmental of themselves. They just don't realize it yet. So मैं सोचती थी, like I had a very high standard of myself and I could never meet it. Every time I met my standard, वो मैं खुद बाल को ऊंचा कर देती थी, and I would never meet my standard. So it's actually sitting with myself. It's actually sitting with myself and actually understanding that alhamdulillah I achieved this, and yes, it's not big for that person, but it's big for me, alhamdulillah. So I cooked something different, it went really well. I did this with my children. Stop comparing yourself to other people's lives. Just for a moment, focus on what you're doing, what achievements you and your children and you as a family unit are making. Mashallah, if your kids are, spending 10 minutes, if you're spending 5 minutes with them together, just enjoying each other's company, talking to each other, and you've never done that before, mashallah, celebrate that, because that is a big achievement when you've never done it before.
Yeah. So definitely do the gratitudes with your children. That changes a lot. Be grateful we're in a situation like lockdown. As you said, it's not going to last forever, inshallah. It's been up and down this year. We've had moments and it can be stressful, but the key is not to it's nobody's fault. We can't take this out on each other. So use it as an opportunity for development, to spend time on yourself, sit with the children, to learn something new. Enjoy this time, because sometimes you don't get this time of togetherness. Like you said, we're so busy in our lives that there's not this opportunity. And I really had to reframe that at the beginning of the year, of like, okay, I'm going to see this as an opportunity to spend more time with my children and focus with them. And mashallah, we've really like bonded as a family, mashallah. So it's been amazing. Tabarakallah, you've achieved so much. And I totally agree with you, sis. You know, as they say, wherever your focus goes, the energy flows. I mean, I've been a culprit of one of those things, you know, whereby you're so attracted to the glitz of the blitz, or the blitz of the, uh, you know, what do you call it? Uh, the glitz of the Ritz, or the blitz of the Ritz, right? So Yes, I've yeah, been a yeah. culprit of that for a very long time. You won't believe it, you know. And the way that the social media works, subhanallah, Sheikh Hamza Yusuf has covered it, you know, long time ago. The way that, you know, TV is going to become condensed and converted into tablets, and then the tablets are going to be more compatible, condensed, converted into mobiles, and then our lives are literally going to be dependent on our phones. And you know, the amount of times in the nanoseconds that the screen changes, it messes up your brain big time. You start relying on that distraction so much that उसके बगैर अगर एक दिन या एक घंटा आपके पास इंटरनेट नहीं हो, आपको लगेगा आपकी जिंदगी जो है तो खत्म हो गई. You know, there's nothing beyond that. So I have been the culprit, you know, of, although मैंने ये सब चीजें पढ़ी हैं, I'm a professional myself, you know, over 15 years में यही सब चीजें corporate sector में भी individuals के साथ भी practice करती आई हूँ. But even then, unknowingly, you know, Yeah. unconsciously, आप उस ट्रैप में घुस जाते हैं, you know, and then वो comparison का element start हो जाता है, and then you feel that's one thing, you know, that has put me into low self-esteem for a few months, and you know, I'm admitting it. You have to be Yes. vulnerable at times, you know, you have to think out loud, you have to talk about it just to give yourself a reminder, you know, okay, Yes. because you know other people are taking examples from you. A person like myself has fallen trapped to this a couple of months, maybe 6 महीने आसान से मैं आपको कह सकती हूँ कि मेरा टाइम इसी तरह से गुजरा है कंपैरिजन में. उसके बाद फोकस कंप्लीटली वेंट आउट ऑफ द विंडो. हर वक्त फोन के ऊपर टिक 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 लगे रहना, ओ जी. ये वो Yeah. ये कर रही है, वो ये कर रही है, मैंने ये भी नहीं अचीव किया, मैंने वो भी नहीं अचीव किया. एंड सुभान अल्लाह, वन डे आई टोल्ड माई सेल्फ, हिना, just stop this is nuisance, you know, go back to basics, press the reset button, set your intentions right, that whatever you're doing is for the sake of seeking Allah subhanahu wa ta'ala's mercy. There is no comparison. Everybody is unique, you Yes. know. हर किसी को अल्लाह Yeah. सुबहान ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है. हर किसी की अपनी कैपेसिटी है टू डिलीवर. अल्लाह ताला ने आपको एज अ वसीला चुना हुआ है उस काम के लिए. तो जब भी आप रेडी होंगे, अल्लाह आपको इस्तेमाल करेंगे उस काम को, you know, पूरा करने के लिए. And that's all that it is. You just need to keep doing your thing, tie your camel, and seek your rewards from Allah subhanahu wa ta'ala. There is no judgment. क्या हम लिखवा के तो नहीं आए किसी से, अल्लाह से, कि हम कितनी जिंदगी गुजारेंगे. You never know when your eyes are going to be closed. So I think the best way going forward, or the summary of today's conversation, sis, would be, subhanallah, that if we as sisters or anybody wants to progress in their life, number one would be to become self-aware and be able to realize your higher purpose in life. Number two, connect with Allah subhanahu wa ta'ala at a deeper level through zikr, your askar, through gratitude. And then as part of that gratitude, you can link it with affirmations as well, that you're being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for making yourself so beautiful and capable enough of serving others. So you can link your affirmation with the gratitude that way. So what else did we cover, sis? Sorry, my short-term memory is gone. Language. Over to No, you. that's fine. Language is really important.
Using Yeah. be very careful and aware of the language. I think that comes into self-awareness. There's journaling, so make sure that if you're feeling something to write it down, so get it out of your system. वो बीमारी बन जाती है, वो इंग्लिश में कहते हैं ना dis-ease, disease बन जाती है. So like Yeah, get it out yeah. of your system. Talking is very good, but make sure you're talking to somebody who gives you good advice. Some people like to give bad advice, so make sure you're Yeah. talking to the right people. We'll repeat, you know, एक बात है कि हमारे उर्दू में we repeat stuff like a record. Broken record वो जो होता है, round and round we go over the same events. वो चीज stop करें. आप कोशिश करें Hmm. कि ये pattern break करें, because it will help you a lot in your way of Yeah, thinking. massively. Yeah, inshallah. Stop judgment. Judgment is a big one. Yeah, Spend quality time with your children, with your spouse. I'm going to go back to yeah, gratitude because I love, like, that is yeah. really a big one. Yeah. Yeah, yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sis. Alhamdulillah. Jazakallah khair for sharing such beneficial knowledge with our viewers. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you for it abundantly. And thank you again for joining me on my program for the second time. And I'm looking forward to having more of you in the future, inshallah. Thank Inshallah. you so much. जी ना, Jazakallah khair. बारकल्लाह फीक। जी नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक था खुद एतमादी के हवाले से, सेल्फ एस्टीम के हवाले से, हमारी जो बहन है तबस्सुम सबेर, शी इज एन इमोशनल मास्टरी कोच, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं फेसबुक पे, उनके नाम से आप उनको ढूंढ सकते हैं। and inshallah I'm more than happy to help you out, you know. हम सब खता के पुतले हैं, हम सब इंसान हैं, we're prone to making errors. However, it's very very important, you know, to whenever you're feeling that you're going downhill, you need to press that reset button and then again start from the basics, which is to, you know, get to know yourself in order to get to know Allah subhanahu wa ta'ala at a deeper level. And that's where the peace is, that's where the sense of fulfillment is, that's where success lies. So until next week, ijazat chahti hu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.